Hello and welcome back, folks. You are watching eISL Season 2, brought to you by Nodwin Gaming, where we give you the most exciting FIFA action, going through 11 clubs participating, everybody eyeing for that top spot and maybe making it into the FGS qualifiers. But right now, ladies and gentlemen, we have finally reached to our final destination for the evening, the final fixture. It is going to be Bengaluru FC taking on Kerala Blasters FC, which is going to be one hell of a matchup. And joining along with me, as always, will be TT. So, TT, one side we've got Bengaluru FC, who has played just one game and has won it, and on the other side we have Kerala Blasters FC, who's playing their third game and they are yet to find those 3 points, or maybe even 1 point of it. केरला ब्लास्टर के लिए आज का सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा या पहले से ही जो है वो शायद प्रॉब्लम से जूझते हो या फिर हाइट से डरते हो और आपको डायरेक्टली माउंट एवरेस्ट पे भेज दिया गया है, तो कुछ उस तरीके का सिचुएशन रह सकता है। क्योंकि एक तरफ जिधर फॉर्म अलग लेवल पे यूजुअली हमेशा चलता है, चरणजोत रहने वाले हैं बेंगलुरु एफसी की तरफ से। ऑन द हैंड हम लोग को शुभम देखने के लिए मिलेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ केरला ब्लास्टर एफसी, जिनका भी परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छा रहा है। ओवरऑल इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म किए थे, बट चरणजोत उनमें कुछ अलग बात है। गेम नंबर 2 की अगर बात किया जाए, चरणजोत एंड सागनिक खेलेंगे बेंगलुरु एफसी की तरफ से। ऑन द अदर हैंड हम लोग को केरला ब्लास्टर्स की तरफ से देखने के लिए मिलेंगे शुभम एंड लुकीमेनु, जिनका फॉर्म कुछ खास गया नहीं है, एंड जब भी वो कोऑप में भी खेले हैं उसमें भी कुछ रिजल्ट्स उनके तरफ नहीं गया है। और आखिरी मैच सागनिक वर्सेस लुकीमेनु, जिधर लुकीमेनु को कम बैक करना होगा, एंड ऑन द अदर हैंड सागनिक बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो या एक चीज तो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा बेंगलुरु एफसी, बट आई थिंक केरला ब्लास्टर के लिए उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, कम बैक करना ही होगा उनको बाय एनी हाउ। Yeah, I mean, no doubt at that, because we are on with CJ going up against Shubham. It is going to be a beautiful matchup, like you said. Everest ki chadhai. I think it's going to be a huge uphill task for Shubham to, defeat CJ over here. And Bengaluru FC, they're the home side in their white kit from left to right, and right off the bat we see Charanjot building up that attack, but Shubham knows he's up against one of the most fierce opponents out there, and he has to watch out. One small mistake and you will suddenly see the ball at the back of your net, and before you even blink an eye, Charanjot is going to score. So stacks heavily favored up against him, but those are the stacks Shubham likes to play with, and he is one of those players who has performed under pressure, and is one of those players on an individual level for Kerala Blasters FC has managed to win a game against Mumbai City FC. I think he defeated Saki, so a little bit of positivity radiating out of him, as he's being very calm. He knows that he just can't let Charanjot have possession, and now he's keeping as much of it as possible. Yeah. जितना ज़्यादा हो सके उनको अपने पास बॉल रखने की ज़रूरत है, एंड वी नो कि शुभम को जो है वो शुरुआत करना होगा गोल्स के साथ। अगर वो शुरुआती में एक लीड ले सके तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो जाएगा उनके ऊपर से। लेकिन बॉल मिला है चरणजोत को, एंड वो ना राइट देख रहे ना लेफ्ट, जस्ट इधर रन निकालते विद रोनाल्डिनियो विद पेस, लेफ्ट साइड एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, कटिंग करके अंदर आने की कोशिश था, बट केविन डी ब्रुयने पे यूज किया जा रहा है, जिनको हम शुरुआती पे यूज होते हुए बहुत कमी देखे हैं। रोनाल्डो एज ऑफ नाउ, जो रूडलीट से डी ब्रुयने, जार्जिनियो, एक बेहतरीन एंड स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड इधर नजर आता हुआ। रोनाल्डिनियो टू रोनाल्डो एंड फिनिश करने की कोशिश था, बट वो नहीं रख पाए ऑन टारगेट। बट देखिए कितना जल्दी ट्रांजिशन पे आ जाते हैं, और सीजे हर मतलब हर मौका बहुत ही ज्यादा डेडली लगता है उनका। I mean, no doubt at that. Oh no, Shubham cannot afford to lose ball like this in such crucial areas, right? When you know that you had the possession, you should have tried to build up an attack. Another L2 long pass being made, that outside footer pass, and CJ, I think he's been doing it all right. He's been making the right passes. He's been going for an interesting choice of player selection. With Theo Hernandez pushing through that left wing, looking for that cutback maybe, and passes it on back towards R9.
And now let's see what he's going to do. Did a little bit of an elastico, tried to pass it along, and CJ is maintaining as much of possession as possible with De Bruyne. Jarzinho now gives towards Theo Hernandez, a little too ahead over the line, goes out for an offside. Yeah. एंड देखिए जब आपका ऑफसाइड होता है उस टाइम पे पूरा जो अटैक है आप जो बनाते हो बहुत देर से वो एक साथ एक सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाता है बट इस बार फिर से एक बार शुभम के पास बॉल बट शुभम नोज दैट कि वो अगर गलती से भी गलत पास करते हैं तो मुश्किलें बनेगा एक बार फिर से बॉल लूज किया एंड लेफ्ट हैंड साइड से थियो हर्नांडेज निकाल चुके थे कट इन करेंगे रोनाल्डिनियो डे ब्रुयने टू हुलीद जर्जिनियो राइट साइड पे पहुंच चुके हैं बट एम्बापे के पास जो पास दिया जा रहा था वो पूरा नहीं हुआ टूरे यह है कि अगर बात किया जाए तो ये प्लेयर हम लोग को एक टाइम पे मेटा पे दिखते थे अगर शुरुआती स्टेज की अगर हम लोग बात करें फीफा के बट उसके बीच में यूज करना बहुत कम कर दिए थे प्लेयर्स Yeah, because of the introduction of the team of the year Bellingham, and then players kind of opted for that card because it's kind of served the same purpose. Yaya Toure, we could see one of the best central defensive midfielders, but look at Charanjot building that chance, almost taken that shot. I mean, did take that shot, but right into the laps of Courtois. And at this point, Shubham, he's been very lousy. I'll not be lying over here because I mean, Charanjot has been constantly keeping the possession, not giving Shubham enough room and space. Interesting actually for him to bring up Yaya Toure. The card is still broken, an S tier card, no matter. Long legs, he's got those reach and can do everything. But yeah, a question mark, not opting for Bellingham. But look at Ronaldinho. And this is where Charanjot really thrives, right? In that final third, where he's got the plethora of skill moves to showcase, and more often than not he just gets away with the ball and scores. But this time Shubham, he's got to calm down, just recycle the ball, maybe change sides a little bit, right to left, do keep Charanjot, just make sure that he's not anticipating that style of play. Make some unconventional plays out there, play some unorthodox FIFA, something that maybe CJ might not be anticipating, and then and only then I see something happening for Kerala Blasters FC because right now Shubham is looking a little bit strong. This time he's been holding on possession for a longer duration, so he's got to keep this going on and on. Yeah, for sure. But as of now, Kerala Blaster उनके तरफ से कोशिश चल रहा है चिकी शॉट बाय द वे एंड I like it. होप कर रहे थे कि वो इधर से एक गोल स्कोर कर दे एंड यार ये कभी कभार ज़रूरी होता है कि आपके तरफ से अगर कुछ भी सही नहीं जाए तो खुद के लिए कुछ सही बनाओ तो वो बनाने की कोशिश नहीं है बट एज ऑफ नाउ राइट हैंड साइड से मौका प्रॉपर्ली बनता हुआ एम्बापे के पास बॉल एम्बापे टू रोनाल्डिनियो बट ये पास में भी ये फिनिश हो सकता है एंड यस इट विल बी अ गोल First goal from the side of Kerala Blaster FC and एक राहत का सांस जरूर शुभम की तरफ से दिखेगा all over the game जब से शुरू हुआ है रहा है डोमिनेशन बेंगलुरु एफसी का चरणजोत का डोमिनेशन लेकिन वही होता है कि आपका एक बेहतरीन पास आपको एक डिफरेंस क्रिएट करके देके जा सकता है ओपोनेंट के साथ एंड वही हुआ इधर शुभम के साथ Charanjot could not believe what he just saw over there. And yes, Kerala Blasters FC, the fans are going to be elated. But Shubham knows that this task is far from over, right? It is just a step in the right direction and the right passes. I like what Shubham has been doing for the last 20 minutes, right? He's been playing some really good FIFA, especially, with those shots that he was taking. The previous chance that he had created, he went directly for the shot. And that is what I was expecting, something unorthodox, something that CJ might not be expecting. And if that goes in, that works in his favor totally. But for now, ladies and gentlemen, we have reached that halftime mark where CJ, who was just relaxing, who was just chilling, thought, this game is going to be a walk in the park, suddenly realizes that he's got an interesting one in the end.
honestly, viewers, we have been talking about this. Kerala Blasters FC, they've got such a nice lineup. They've got two very efficient players. It's all about them just stepping up, living that moment, converting those chances, and Shubham has done right now. I mean, it's 1-0, but we know for a fact it's quick and it's too early to celebrate for Shubham. Even the moment he scored that goal, he was like, okay, I scored a goal. I still need to watch out because from what I have seen in the past, I mean, I might be sounding a little biased, but Charanjot, he's a man of second halves, right? And the moment you're in the second half, that is where he starts getting even more deadly. Starts scoring goals, and then he just rampages through, and there you can see. Now trying to create chances. R9 was beyond the line, so did not opt for it. Now with Hulit, looks to passing towards Pele, but this time Adam Militao was there for the rescue, but stolen again. एंड शुरुआत देखिए इधर फिलहाल के लिए तो बहुत इवन रहा है फिलहाल के लिए एंड राइट हैंड साइड से फिर से बॉल बनाया गया बट अल्फांसो डेविस को खिलाया जा रहा है लेफ्ट बैक के ऊपर एंड चरणजोत वो कोशिश कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पेस को लेके आ जाए गेम के अंदर बट केरला ब्लास्टर की अगर बात करें केरला ब्लास्टर एफसी एज ऑफ नाउ शुभम जो लीड इधर देके गए हैं अगर इसको पूरा बरकरार रख सके सो बहुत बहुत ज़्यादा शानदार पोजीशन बन जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा टफेस्ट ओपोनेंट्स में से एक है चरणजोत एंड अगर आप उनको हरा पाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन अभी भी बहुत टाइम बाकी है एंड जस्ट 52 मिनट्स हुआ है कभी भी कम बैक हो सकता है चरणजोत की तरफ से अगर सिर्फ एक ही गोल का डिफरेंस इधर रहा बट अलोवारन to Ronaldo. Oh. No, Militao, no. I like it, Titi. Come on, we have to give it to Shubham. You know, he's going for those moments where Charanjot might not anticipate. You know, Eder Militao taking a shot like that. But good one. Yes, it is. Yes, it is. Shubham enjoying the moment. Charanjot absolutely stunned by what hit him. You know, fast as a bee, just swinging through, crossed it into perfection to Rudulit, and he does not miss from that stance. And now we can say Kerala Blasters FC might just be doing the unthinkable. Charanjot looks vulnerable, 2-0 up, and Shubham is riding that momentum train, is on that hype train as Charanjot with those quick step overs wanted to get through, and now you can see he's fumbling a little bit. He's struggling a little bit, and Shubham is quickly taking control. And this is what the pressure is. And Charanjot फिलहाल के लिए प्रेशर फील करते हुए एंड उसी जगह पे एक एक्स्ट्रा होल्ड एंड बहुत शानदार इंटरसेप्शन फ्रॉम द साइड ऑफ शिवम एक बार फिर से बॉल निकाला गया है थ्रू बॉल कंट्रोल भी मिल चुका लोवारन को एंड जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तब सब कुछ आपके लिए सही चलता है आपका लब ही आपका साथ देता है एंड वही चीज इधर देखने के लिए मिल रहा है दो प्लेयर्स के बीच में से अलोवारन इस तरीके से बॉल निकाल के लेके जाएगा कौन ही सोचा था बट यार वही चीज हो रहा है बॉल कंट्रोल प्रॉपरली अपने पास रखते हुए एंड इधर शुभम जानते हैं लाइक कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं एक जर्मन क्रॉस के साथ बट इस बॉल वैन डे सार आगे एडवांस हो गया है इसी वजह से मौका नहीं बना बट क्या चरणजोत इस काउंटर पे हिट कर पाएंगे बॉल निकल चुका है एम्बाप्पे के लिए बट डिफेंस लाइन प्रॉपरली अपने पोजीशन पे मौजूद है एक पास निकालने की जरूरत है जो कि निकालना बहुत टफ हो रहा है आज Oh, I like this. I like this FIFA coming in from Shubham. You know, this is a proper foot champs game where you won that 20-0, and the moment you score 2 goals, you keep possession. I mean, if I were Shubham, I would just hog on the ball forever. Does not matter. It has happened with me after first half. You know, opponents have been hogging possession in their halves and not just giving the ball away. Just pass it from your left back to your right back. Frustrate the world out of CJ over here. And Shubham, oh, it's 70 minutes already in. He might just be doing the unthinkable because, you know, Charanjot, he's been off his beat right now. And Shubham, he's in good control. And this is exactly what the Kerala Blaster fans hoped for.
and this is what they're in for. And such a good start given by Shubham. When we were kind of thinking it is going to be such a tough climb, I think Shubham did bring his oxygen cylinders, did bring all those ladders, has the Sherpas helping him, and whatever it is, he is Yeah. climbing Everest. And maybe in the next 20 minutes, we finally see him, conquering, because Charanjot, he is one tough nut to crack, and seems like Shubham has found the right crevices to pierce through. And now Charanjot, he needs to score one at least, and he's being patient. He's trying to make those build-ups. Let's see what can he make out of this attack, but again foiled. Again, one more time, but फिर से काउंटर पे हिट करने जा रहे हैं शुभम, एंड मे बी दिस टाइम वो अकेले शॉट निकाल सके, लेकिन नहीं। आखिरी मोमेंट पे थोड़ा सा इधर एक पास निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बदौलत देखिए कितना इजीली बॉल निकाल रहे हैं, एंड इतना इजीली बॉल निकालते हुए इसके पहले नहीं देखा बीचों बीच एंड विद अनदर गोल, दिस विल बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन, एंड शुभम क्या खेल रहे हैं आज, क्या मोमेंट है ये। Charanjot on the other hand, just with 0 goals and 3-0 के लीड पे अभी के लिए चल रहे केरला ब्लास्टर। जो टीम कल तक स्ट्रगल कर रहा था, वो टीम आज डोमिनेट कर रहा है, वो भी one of the best player के ऊपर। Yes, one of the best players, not just in the country, but in the entire South Asian region. Charanjot is being dominated by Shubham. The Viper strikes, and he really did sting him with all that venom. And now Alaveran making another run, has that passing option, but maybe Alfonso Davis for CJ just read it. And this, yes, like you said, could be lights out possibly for CJ over here. And now he's trying to build up that run, but nothing seems to work out. But maybe this time it will, with Mbappe. Goes in for the shot, but Courtois making those save. Oh, what would it take for Shubham to let go, to maybe concede a goal, maybe another attempt at that. Looked a little scrappy, but still Courtois making that save again. And Charanjot at this point might just have given up with just merely 5 minutes remaining. I don't see any possibilities that CJ could come back into this game. And what an emphatic victory would it be for Shubham on a personal level. This time the keeper charging with all he had will save the goal, but Shubham just enjoying himself. A little quick recap of eISL Season 1. Shubham was termed by Azim and I to be the Randy Orton of eISL, the one with the RKO, the Viper, whatever you may call him. And he's got that personality, and finally he strikes with all that venom into the hearts of CJ. Oh my God! मैच के शुरुआत में हम लोग इतना डिस्कशन किए कि मे बी ये मे बी वो, लेकिन इट्स एंड अप विद अ विनिंग, वो भी सिर्फ 1-0 से नहीं 3-0 से। केरला ब्लास्टर शुभम, आई थिंक पूरा केरला ब्लास्टर साइड आज बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे शुभम के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया इस मैच के ऊपर, आई थिंक मुझे लगता है कि वो उन्होंने प्रॉपर्ली स्टडी करके आए थे, एंड जितने भी पासेस उनके तरफ से निकालता जा रहा था, वो बार सेम चीज नहीं कर रहे थे। वो कभी ग्राउंडेड थ्रू निकाल रहे, कभी लॉब थ्रू निकाल रहे, कभी लॉब पास दे रहे हैं, जर्मन क्रॉस एंड सब कुछ, जितना ज्यादा जितने ऑप्शंस है वो सब कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, सब कुछ यूज कर लिया। एंड oh my God, what a game from the side of Shubham. I really hope the production hears us out and gets us an interview with Shubham at this point, because I really want to know what he's going through. Because trust me guys, trust me viewers, it's not easy, it's not daily you see somebody beat a player like Charanjot, and that too with the 3-0 scoreline. This is something that the Indian FIFA players sometimes even dream of, and Shubham has achieved that. And he was not celebrating, he was like, I know from the inside he's smiling, he's like, yeah, I got this boy, I got this. And but what a beautiful day. I think if you have to sum this matchup, CJ in the first 20 to 25 minutes he was looking really strong. He was looking to be in absolute control over this game,
He was looking, that he's going to score maybe 4-5. Then suddenly, Shubham changes his rhythm, and then he starts making those unorthodox plays. He's taking shots on attempts, and he missed the first time, but second time was the charm, right? He converted it and did the unthinkable. It's just like you go back to maybe a Norse mythology reference, where in the Battle of Midgard, where you um, I mean, where heroes and our champions bleed against the gods. It was a similar clash, not the Ragnarok clash where the giants go up against the gods. It was a mere human, let's say Kratos, the god of war, going up. He's also a god though, but wow, what a play by Shubham, nonetheless. It was so amazing. I mean, at this point, I'm so happy for him because Kerala Blasters FC, they needed this. They needed this push. And I'm pretty sure Lokmanu must be manifesting the energy coming out of Shubham right now, because the next match, well, let's just not hop the boat, TT. Let's remember for a fact that we still have 2 more games to go. For you Bengaluru FC fans who might be absolutely gutted, there's still chance that you can take home 3 points, provided they win the co-op and Shagnik defeats Lokmanu. But for Kerala Blasters FC, it's a little bit easier. All they have to do is go on and win the next match, and they might see themselves through, not leaving till still the final battle. But wow, मजा आ गया, फुल पैसा वसूल मैच. बिल्कुल मजा आ गया, क्योंकि हम लोग वो कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस जो रहते हैं उसको बदल देना एंड आपके दिमाग के साथ खेल जाना, कुछ उस तरीके का था ये मैच. बट जो नेक्स्ट मैच है उस मैच पे कोऑप पे लाइक अगर हम लोग बात करें मेनली, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ शायद चेंज होता हुआ दिखे. जिधर हम लोगों को पहले मैच में चरणजोत आज थोड़े बहुत गलतियां करते हुए दिखे हैं. अगर हम लोग ओवरऑल देखिए, मिस पासेस हुए बहुत सारे उनकी तरफ से, एंड जब वो मौके बना रहे थे उनके राइट लेफ्ट पे प्लेयर रहने के बावजूद वो थोड़ा सा लॉन्ग पासेस के लिए जा रहे थे, वो भी थ्रू नहीं, वो ग्राउंडेड जा रहे थे, जिसके बीच में इसी वजह से बहुत सारा मौका क्रिएट हुआ. बट शुभम के लिए तो ऑब्वियसली बोलना होगा, ये उनका ब्रिलियंस था कि उन्होंने इस तरीके से भेद किया चरणजोत के डिफेंस को. बट ऑन द अदर हैंड, जब हम लोग कोऑप की बात करेंगे, हम लोग पिछले गेम पे भी देखे थे, जब फर्स्ट मैच था बेंगलुरु एफसी की तरफ से, कि जब भी शाग्निक आते हैं उनके आने के बाद उनके लॉन्ग बॉल प्लेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड उसी के साथ उनके जो मिडफील्ड है, मिडफील्ड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बॉल लेके जो है वो घूमना पसंद करते हैं. लाइक घूमना मीन्स आप क्रिएट करना, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो मेनली क्रिएशन है वो मिडफील्ड के ऊपर से ही आता है. वो डिफेंस से डायरेक्टली 1-2 करते करते आगे नहीं जाते. वो लाइक मिडफील्ड पे थोड़ा खेलते हैं, पासेस थोड़ा टाइम लेते हैं, जब गैप मिलता है उसके बाद वो पास निकालते हैं. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो बेहतर होगा. मिडफील्ड गेम स्ट्रांग होने वाला है बेंगलुरु एफसी का इसके बाद, लाइक ये कोऑप मैच के अंदर. बट ऑन द अदर हैंड, लोकमेनु अगर वो भी इसी तरीके से चार्ज्ड अप हो गए शुभम के साथ एंड सिनर्जी बन गया, तो ये हो सकता है कि रिजल्ट हम लोग को नेक्स्ट मैच में ही मिल जाए. I'm just wondering what the conversation between Shubham and Lokmanu would be going on. Like, देख भाई, सबसे मुश्किल पड़ाव तो मैंने क्रॉस कर लिया, अब बस 2 गेम्स रह गए. इस गेम में कोऑप में कुछ भी करके जीत जाते हैं, एंड लेट्स नॉट पुट इट टू द थर्ड गेम, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, Shagnik on an individual level is such an amazing player. I still have the memories of that game against Imad, where he went on to defeat him 4-3. It was a end-to-end matchup between these two players, and both of them so good. And this is where I think even Shagnik and Lokmanu's matchup is also going to be a blockbuster, no doubt on that. But this time Lokmanu must be hoping that he does not make those defensive mistakes. That has been one of the causing concerns for him, because he's been extremely displeased with what has been going on. And there have been instances where he's been sort of unlucky. There have been instances where his defense has been all over the place. Attacking wise, I think Lokmanu still is one of the finest players, one of the oldest veterans of the community. But Shagnik is one of the players we all know has got that champion's instinct in him. And once he settles in, once he's in the flow of the game, he's definitely gonna be in there scoring goals for fun. He has the capability to do that. But heading on into the co-op game, I'm pretty sure Charanjot will not be
happy with the outcome of the previous game. So he's going to be breathing fire. He's going to be enraged, and he's going to do whatever it takes, folks, to win the co-op game and put his team back in momentum. And now the co-op game has already begun. Bengaluru FC, the home team, from left to right in their white kit against Kerala Blasters FC in the black. And right off the bat, we see them trying to create chances from that left wing. Oh, Yeah. Oh. एंड लाइक इस गेम के हर एक मोमेंट पे शायद हम लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है. बेंगलुरु एफसी के फैंस दिल थाम के बैठिए. बट इस बार केरला ब्लास्टर्स लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ते हुए बीचों बीच वर्चुअल वैन डाइक मौजूद है. तो आप देख सकते हैं क्रॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं. डर नहीं रहे इधर केरला ब्लास्टर. उनको ये डर नहीं है कि उनका ये अटैक अगर चला जाए या फिर क्लियर हो जाए फिर क्या होगा. वो कोशिश कर रहे हैं कि हर एक अटैक से वो कुछ ना कुछ जो है वो निकाले, कुछ प्रोड्यूस करे. एंड वो चीज प्रोड्यूस किया जा रहा है एज ऑफ नाउ. रोनाल्डिनियो बॉल छीना जाएगा. केविन डे ब्रुयना टू रोनाल्डिनियो एंड एम्बापे. इन टू इन गेम चलता हुआ. बट बेंगलुरु एफसी मस्ट विन मैच. हालांकि वो पिछला गेम जीते थे, लेकिन फिर भी अगर वो ये मैच भी जीतते हैं तो वो टेबल टॉप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों मैच तो निकाल सकते हैं. बट वो अभी बहुत दूर है, क्योंकि पहला मैच जीत चुके थे शुभम 3-0 के साथ. एंड केरला ब्लास्टर इस गेम के अंदर एटलीस्ट अपर हैंड रखते हैं. क्लोज आ गए थे बट लूसियो फाइनल टाइम डिसेप्शन. खतरा टला, बट खतरा बढ़ता जा रहा है केरला ब्लास्टर्स के ऊपर. oh, I see, to mix up defensive styles, where you can see one of their players going for the charge runs, one of their players being on the back lines. They are fighting for the ball. It's not like, they're letting Bengaluru FC, just do the tango and they play along the tunes, right? They are going for it, and this is good. But this is such a risky move, right? One wrong pass, one touch too many, one little extra heavy, charge at the player, and suddenly your defenses open up. They know what's on the stake, and now Bengaluru FC, oh, this was a good chance, almost created there, but now on the counter attack are Kerala Blasters. Now with Mbappe, you could possibly go for the run, but two defenders are already there with R9. I felt if he had just gone in, would have been a different case with Ronaldinho, though, did that ball roll, passed it back, and I like this kind of a FIFA coming in from Kerala Blasters FC again and again. Just constantly recycling the ball over here with Jairzinho went in for the step over, trying to beat the defender, but Bengaluru FC, they were ready for this. They are ready for this. And पिछले गेम पे जो हशर हुआ था बेंगलुरु एफसी के डिफेंस का, वो बिल्कुल भी इस बार नहीं दोहराना चाहेंगे. तो इसी वजह से और भी ज़्यादा कॉन्शियसली डिफेंस करते हुए दिख रहे हैं केविन डे ब्रुयना एज ऑफ नाउ. बॉल ड्राइव करने की कोशिश, बट बेलिंगम फिजिक के चलते बॉल निकाले हैं, बट थ्रू खिलाया जाएगा रोनाल्डो को. बट जब तक खिला रहे थे तब तक ऑलरेडी डिफेंस अपने स्ट्रक्चर में फिर से वापसी कर चुके थे. सो काउंटर तो इधर नहीं बन पाया. लेकिन अगर पोजीशनिंग की बात किया जाए पिछले 25 मिनट पे, मुझे लगता है कि पोजीशनिंग थोड़ा ज़्यादा रखा गया है बेंगलुरु एफसी के पास. और जो फिलहाल के लिए बॉल अपने पास रखते हुए केरला ब्लास्टर एफसी, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं आज. लाइक पिछला जीतने के बाद मुझे लगता है कि लोकेमेनु वो भी हो सकता है, बट एक गलती अलोवारेन तो डेब्रुयना लॉन्ग रेंज शॉट्स लेने में भी कैपेबल है. नहीं लिया जाएगा. अभी भी प्रेशर ऑन. रोनाल्डिनियो शॉट, बट आउटसाइड ऑफ द नेट. ओह, बाल बचे. Oh God. I mean, at this point, Bengaluru FC, they were so close, but it's all right. 30 minutes have gone past by, and it's such an interesting matchup where you can see, Kerala Blasters FC, they're kind of relying on those counter attacks to build up their plays. But one thing for sure that we're witnessing is the moment they break for a counter attack, they do not have enough numbers, right? And Bengaluru FC, they're making sure that the defensive line isn't that high enough. And one thing they've learned is anytime they can break through, and with players like Mbappe, Ronaldinho, you've got that pace, you can instantly make a run. So they cannot leave those openings, right? So we'll have to see how Kerala Blasters FC forms their attack and what is going to be their next move. Big questions, but the ball going out of play,
wanted to shuffle the sides, but this time it was a little, cheeky there. One of their players being present, and their own player just went outside the sidelines. So that was something, a little bit of a miscom maybe, as Ronaldinho, a little step over, pass on towards De Bruyne. And we haven't seen De Bruyne flourish yet. I mean, you would expect De Bruyne to be throwing all those long passes, but again, a beautiful step over, a shot, and missed. In fact, Courtois taking that defense, saving the goal as we head on for a short corner. With the short corner, अभी भी pressure on Bengaluru FC. थोड़ा सा ज़्यादा देर बिता लिया बॉल के ऊपर, बट फिर भी एक बार और कॉर्नर मिल जाएगा. तो फिर से शॉर्ट कॉर्नर के लिए जाते हुए शायद रोनाल्डिनियो को क्लोज बुलाया गया. एंड आई थिंक फिर से एक बार शॉर्ट कॉर्नर के लिए जाएंगे. इस बार मौका बन रहा है, जगह मिला. लूसियो विद द फिनिश एंड गोल मिल चुका है बेंगलुरु एफसी को. बट एक टाइम पे मुझे लगा कि शायद रोनाल्डो जिस जगह पे खड़े थे उस क्रॉस के ऊपर शायद वो ऑफसाइड हो जाएंगे, बट नहीं. उधर पीछे एक डिफेंडर भी मौजूद थे केरला ब्लास्टर के, सो दैट्स व्हाई इधर ऑफसाइड नहीं हुआ. लेकिन ये मैच अगर बेंगलुरु एफसी जीत के खत्म करते हैं, देन जो एडवांटेज के साथ शुरुआत हुआ था वो एडवांटेज खत्म होता हुआ दिखेगा. अभी भी बहुत टाइम है, अभी जस्ट शुरुआत हुआ है. 30 मिनट्स के अंदर पहला गोल आता हुआ, बट फर्स्ट हाफ बहुत जल्दी इधर खत्म होता हुआ दिख जाएगा. क्या उसके पहले एक इक्वलाइजर दाग पाएंगे केरला ब्लास्टर? लेट्स सी. Such a sucker punch for Kerala Blasters FC. I mean, out of every possible player, Lucio is the one who scores, and just as mere 66 finishing. And from that angle, and I think one of those good traits about Lucio is he's got insane shot power. And you could see that ball just blasting through the back of the net, and this is I think typical CJ, right? Just goes in for the shot, and I think, I mean, had it been that little bit of a outside footed shot, could have had that little curl going in, but it's all right. I mean, Bengaluru FC still have that one goal lead, and Shubham and Lokmanyu little rattled because they did not see this coming. This was not in their plans, but yes, this time with Mbappe, a blistering run, maybe a ball roll to cut back, and this is a simple tap in. As Shubham, you can watch him just smiling, and this is more like a Dimitri Payet default finish celebration that Bengaluru FC opted for, and this is where Kerala Blasters FC, they kind of know that the match is slipping away from their palms. What a game! What a matchup! शुरुआत 3-0 के साथ, कोऑप मैच में आके 2-0 ऑलरेडी हो चुका है, एंड किस तरीके से खेल रहे हैं, जस्ट लाजवाब. शॉट अभी तक एक भी नहीं ले पाए हैं केरला ब्लास्टर एफसी, बट आई थिंक इधर थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, एंड अगर इधर से ड्रॉ भी करके खत्म कर पाते हैं केरला ब्लास्टर एफसी, देन वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एंड हो सकता है इस मैच का. लेकिन अभी जो 2 गोल्स का फासला बन चुका है, इसको तो पहले इक्वलाइज करने की जरूरत है. सो देखते हैं किस तरीके से करेंगे. एंड द मोमेंट साग्निक केम इन, इधर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ चुका है बेंगलुरु एफसी की टीम के ऊपर, एंड वो चीज हम लोग को नजर आ रहा है. मिडफील्ड प्रॉपरली स्ट्रांगली इधर आउटकम निकालते हुए, बट इस बार एक गलत जगह पे बॉल लूज कर चुके थे, लेकिन फिर भी उसका उतना कुछ खास फायदा नहीं हुआ. Slowly but TT, slowly but surely, I think Bengaluru FC are taking control over this game, right? You could see that one other stat that I really wanted to point out once that halftime marker hit, that the Kerala Blasters FC have been unable to take even a single shot on Bengaluru FC yet, and whereas they've been hit with 5, out of which 2 have gone for a goal. And I am really liking how they've been, how Bengaluru FC have been threatening from the wings, just going for those cutbacks. Then that extra skill move, that ball roll. And the moment you do a ball roll, you've got so many options, right? You can take a shot, you have some passing lanes opening up, and no, this is something that Kerala Blasters FC cannot afford, giving away these loose balls and
hence those free kicks also coming in. Just a little tap, and now on Rude. We've seen such instances where you just tap the ball and suddenly the next player kind of takes that L1 R1 power shot. So there have been moments where that whizzes past through, but at this point, Bengaluru FC, nice heel to heel over there with KDB looking for that pass. Lucio still just standing tall as a wall, but right now Kerala Blasters FC getting a little impatient. They need that one goal, and how are they going to start off? We're trying to level. It's looking really bleak at this point. Yeah. 58 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड उसके साथ एक पॉज भी लिया जाएगा बाय द वे बट देखिए इधर ज़रूरत है केरला ब्लास्टर की तरफ से थोड़े बहुत चेंजेस की क्योंकि अगर वो चेंज इधर नहीं करेंगे फिर बाद में जाके थर्ड मैच पे फिर से एक बार लोकोमेनु के ऊपर प्रेशर आएगा क्योंकि सागनिक की अगर बात किया जाए उनका मैच काफी अच्छा गया था पिछले गेम पे एंड उन्होंने जीता था तो इधर भी एक चांस वैसा बन सकता है लोकोमेनु के खिलाफ क्योंकि लोकोमेनु की अगर फॉर्म की बात करें उतना कुछ खास चला नहीं हो सकता है कि आज ही वो दिन हो जिधर वो कम बैक करे बट वो हम लोग कह नहीं सकते तो इसी वजह से अगर देखा जाए अभी तक के फॉर्म के हिसाब से तो सागनिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं लेकिन अगर इस मैच पे यही तरीके का रिजल्ट हुआ तो ऐसा भी हो सकता है इवन विथ विन के साथ शुरुआत करने के बावजूद वो इस पूरे मैच हार सकते हैं तो इसी वजह से कोशिश करना होगा ये 30 मिनट्स के अंदर वो इधर इक्वलाइज करे पोजीशनिंग देखिए एक बार 63% पोजीशन अभी तक बेंगलुरु एफसी की तरफ से रहा है ऑन द अदर हैंड केरला ब्लास्टर एफसी विथ ओनली 37 इससे ही जो डिफरेंस है वो इधर पता चल रहा है Yeah, I think this is where Kerala Blasters FC, they've kind of completely lost their rhythm inside the game, and Bengaluru FC are just walking, and rather not just walking, sprinting their way to victory. One more goal and could be lights out for KBFC at this point, because what they have been struggling with is again their co-op, but now they're looking forward to maybe change things, make things right this time around. At least still holding on to that possession and Bellingham towards Pele will look for that cutback, but that sprint a little heavy on the ball and just goes out for a goal kick. And this is something, these are those tiny mistakes that you can't afford at this point, especially when you're 2-0 down against a team like, or rather a club like Bengaluru FC. Thankfully, they have retrieved possession, but the big question mark is what are they going to make of it? With Capdevia trying to get inside, a back pass on towards Hullet. Bellingham wanted to give it to Ronaldinho, but ball was taken away. Beautiful receive by Ronaldinho from Bengaluru FC. And now Mbappe knew he did not have a lot of passing options, but this time he's got some space with Hakimi and passes it on towards Ronaldinho. Beautiful chance for Oliveira. Wanted to give it back towards Hullet and then take the shot, but little too overwhelmed and has been well defended. And now KBFC can maybe launch a counter attack, but it's still too late. एक टाइम पे अलोवारन एक लौते प्लेयर थे जो कि डिफेंस लाइन के बाहर भी उनको बॉल मिला था लेकिन पहले से ही वो हो जाता है ना कि आप पहले से ही पास सोच के जो है वो कर देते हो सोच के भी रखते कर भी देते हो तो उसके बाद और आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन फिर से एक बार मौका एम्बापे फिनिश कर सकते हैं एम्बापे भी फिनिश कर सकते थे बाय द वे ऑन दैट पोजीशन बट व्हाई आई डोंट नो कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं 3-0 हो सकता था बेंगलुरु एफसी के लिए बट केरला ब्लास्टर्स के लिए कुछ भी चीज इस गेम के अंदर तो एटलीस्ट सही नहीं जा रहा Yeah, I mean, look at the possession stats, right? 59 to 41, not the best of the odds at this point against a club like Bengaluru FC. And yes, I completely agree with you. I think that was quite unnecessary, but Bengaluru FC, they kind of have that two goals cushion, right? And when you are so late into the game, where Kerala Blasters FC haven't really been looking to be in their best groove, and this is such a, such an unexpected turn of events, because I felt they could have carried forward with the momentum, but they never for once we could say that KBFC were looking in control of this game. It was all Bengaluru FC just spitting fire. The moment we saw, Shubham defeating Charanjot, I think something just got into them, and
they are stomping through it. The score line is still 2-0, but does not really feel like that because Kerala Blasters FC haven't given their fans moments to rejoice, and it's been such a tough tie. And especially when Charut and Shagnik, both of them are playing on their toes, they know that one small mistake could cost them massively. And yet again, here they are with their attack, with Pele making that run through that right wing, pass it on to Mbappe, who wanted to give towards R9. The previous attempt also, when R9 went for that header, it was a green timed one, but it was a very, how would you categorize it? I did not feel R9 was in the best control of the ball. Like the moment he received that, he went in, and not the best of angles, but this could be, as there you go, green time finish. And this is where Bengaluru FC bury Kerala Blasters FC again, 6 or 10 feet under this time, as all the hard work of Shubham winning that game against Charanjot is finally washed off, forgotten. Because next up, I think we should look forward to the next game where Shagnik or Lokmanu both have chances to be a hero for their club, as Kerala Blasters FC looking for a little bit of a consolation, and then they will get it. फाइनली पहला गोल आता हुआ एंड आई थिंक इट्स टू लेट. गोल्स आएंगे बट अभी के लिए तो टाइम चाह चुका है कम बैक करने का. बट आप देख सकते हैं इस पूरे एंटायर सिनेरियो के अंदर कि बेंगलुरु एफसी बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन सिनर्जी के साथ परफॉर्म किए. एंड हर एक टाइम जब जब इधर पास निकले, देखिए एक बार फिर से निकाल चुके हैं. एंड यही चीज तो है, यही केमिस्ट्री चाहिए होता है आपके दो प्लेयर्स के बीच में. कि एम्बापे जस्ट रन निकालते हुए देखिए, एंड उसी टाइम पे पास किया गया. देखिए कितना जल्दी इधर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं आर्लिंग हॉलैंड. और नहीं, इस बार पास जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया. I think one of the set strategies, I'm not sure, like we need to have a conversation with Bengaluru FC players, is that, Shagnik kind of gives the ball towards Charanjot and he performs a skill move in the final third and finishes it. Because we've seen multiple instances where, they could possibly go for the goal, but they're going for that one extra pass. And even in multiple instances, or maybe they have, it could be the roles other way around where, Charanjot creates the chance and passes it on towards Shagnik for finishing. But either way, the final whistle has been blown, and it all comes down to these two faces right in front of us. The final clash, the clash amongst the Titans, Lokmanu against Shagnik to decide, how things are going to end in this fixture. Again, that this final matchup of the evenings every single day when we see in eISL are always like a finale for us, right? It's been nothing short of a roller coaster of how things had started. Shubham, just cruising through, and which we thought would be a really hard climb, made it look really easy. Trust me, it's not. Beat Charanjot, and then in the co-op game, Bengaluru FC bounced right back to win, and now we are back. The tables have been evened. Everything is where it begun. Falls down to that last game, TT. Yeah, the decider one. Let's see. क्या एक बार फिर से बेंगलुरु एफसी अपना जो विनिंग रन है उसको कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं, या फिर वो जो सनशाइन दिखा था शुभम की तरफ से वो पॉइंट्स पे कन्वर्ट होगा. क्योंकि सब कुछ अभी देखिए अभी जा चुका है लोकमेन्यू के ऊपर. वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, वो अगर इधर से परफॉर्म कर पाए तो ही शायद पहला पॉइंट्स आ सकते हैं इधर केरला ब्लास्टर की तरफ से. बट इफ नॉट देन केरला ब्लास्टर बैक टू बैक शायद 3 मैच हार जाएंगे और उनके पास पॉइंट्स नहीं रहेगा. तो शुरुआत हुआ था चरणजोत वर्सेस शुभम के बीच में, जिधर शुभम इधर चरणजोत को हराए 3-0 के साथ. एंड जो कोऑप मैच है, कोऑप मैच के अंदर शाग्निक की एंट्री होने के बाद मिडफील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि लाइक उसको तोड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था केरला ब्लास्टर को. सो इसी वजह से शायद पूरे ऑल ओवर गेम मिला के एक ही शॉट लिया गया एंड वो भी गोल पे खत्म हुआ. तो ये आखिरी मैच लोकमेन्यू के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा है, बट उनके पास एक और मौका है प्रूव करने का. या हो सकता है इतने दिन से फॉर्म सही नहीं चल रहा है, बट आई कैन रोर. क्योंकि जो लायन एक बार
उनको शिकार करना आ जाता है, वो शिकार करना भूलते नहीं है. सो या उनके पास एक चांस है. He just needs to taste that blood. The moment he Yep. does that, just on his tooth here, I know, look, man, you can flip things over. We have seen him, make beautiful comebacks also, but has had a, rocky start to his campaign in the eISL. But this is where he's again against a very formidable opponent like Shagnik, who's having a really good run so far. I mean, that matchup against Imad was fantastic, right? 4-3 win for him. I think they had won, if I have to check. I think they had won their co-op match. No, rather it was tied up against Shagnik and in fact against Imad and Charanjot. But Shagnik was the one who ensured that he's gonna walk off with nothing less than a victory. It came down to the wire. It was a 4-3 scoreline. So now, as the sun sets slowly down the horizon, we have to find who is going to be the victor of this battle. This is no more a matchup. It's an absolute battle where, both the clubs are just exchanging blows. The first match, suddenly, unexpectedly, Kerala Blasters take that win, and then, Bengaluru FC bounce back. And for the viewers, a quick reminder, it's the home matchup for Bengaluru FC where you would expect them to go on and win. But in the realms of FIFA, we've seen quite a lot of unexpected things happening, and which all boils down, ladies and gentlemen, to this final game. And anything could happen. And all the viewers in the chat, please let us know, who do you think is going to win? Do you think Kerala Blasters FC have got what it takes in Lokmanu to finally, give a huge hole, a huge denture in the run of Bengaluru FC early on, and show that, yes, maybe gods do bleed? Or is it just going to be Bengaluru FC, beating Kerala Blasters FC and showing that, yeah, we the daddies over here, we run the show? So anything could possibly happen, but let us know which club you're supporting, and let's just hope this is going to be one hell of a matchup. फॉर श्योर. एंड मैं तो चाहता हूँ कि लोकेमेनु शुरू करे एक लीड के साथ, क्योंकि अगर वो लीड के साथ शुरू करेंगे तब उनको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि अभी तक उनका जो रन हम लोगों को देखने के लिए मिला है, एंड eISL सीजन 2 के तो हम लोग बात कर ही रहे, या फिर उसके पहले भी अगर हम लोग देखें तो उनका फॉर्म कुछ उतना खास नहीं चल रहा था, पटरी में नहीं थे वो, तो उसको वापस लेके आने की जरूरत है. और वो कोशिश चल रहा है, हालांकि बैक टू बैक कोशिश चल रहा है. बट आई थिंक मुझे लगता है कि वो थोड़ा अनलकी भी है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें फर्स्ट मैच वो हार गए, फिर उसके बाद शुभम बार बार आके एक जीत के साथ शुरू कर रहे, फिर कोऑप पे जाके यानी कि जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो रहे. सो या लेट्स सी, लाइक जो एक प्लेयर बाकी प्लेयर्स को इधर सिखा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन होता है. बट बात कर रहे थे, एंड फाइनली द फाइनल गेम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन फॉर द केरला ब्लास्टर एंड बेंगलुरु एफसी के लिए भी, क्योंकि बेंगलुरु एफसी अगर ये जीत लेते हैं तो वो टेबल टॉप करने वाले हैं. सो यस, एक बहुत सारा शानदार चांस है कि वो इधर से टेबल टॉप करे. बट ऑन द अदर हैंड लोकेमेनु, लेट्स सी वो क्या करते हैं आज. Indeed, we've got two different narratives over here. Bengaluru FC eyeing to be the top of the table, and Kerala Blasters FC looking forward to adding a few points on board. Let's not rule away the possibility of a draw where both of the teams are going to share a point each. I mean, Kerala Blasters FC, after such a thunderous start, I think they would want this match to be decisive, want to go one of the ways, and mostly in their favor. As Lokmanu, look at that with Jairzinho, blistering pace, looking for that cutback, a little bit ball roll, and there you have Ronaldinho in the perfect position, but Hakimi just puts his legs out there and saves the day. Good start for KBFC, and Shagnik needs to wake up. He cannot let Lokmanu just get away with doing things like that. एंड दिस इज द टाइम जिस टाइम पे लोकेमेनु को कोशिश करना होगा कि ये बार बार दोहराते रहे, क्योंकि अभी देखिए प्लेयर्स का जो स्टैमिना है वो हाई है, सो पेस भी ज़्यादा रहेगा. सो उस जगह पे अगर आप कर पाते हो, इधर डिफेंस को तोड़ पाते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर मौका रहता है, या स्प्रिंट पे बिट कर जाओ एंड उसके बाद जाके फिनिश करो. बट इस बार लोवारन, चुम्बापे एंड बॉल कंट्रोल है शाग्निक के पास. देखिए मिडफील्ड के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम वो बिताएंगे फॉर श्योर. 1-2 पासेस और जाएगा, एंड फाइनली एक मौका बनता हुआ हील टू हील,
क्या वो निकाल पाएंगे? बट डिफेंस लाइन को देखिए केरला ब्लास्टर की तरफ से सब लोग एक आर्मी की तरह एक लाइन पे खड़े हो गए कि निकल के दिखा, कुछ इस तरीके का सिचुएशन था उधर। Much better defending from Lokmanu this time, considering his past giveaways for the ball, and this time he knows the kind of a situation he is in, and he's one of those players who thrives under pressure. So this is going to be it. This is where he, kind of can become the hero for Kerala Blasters FC. A perfect opportunity, as his teammate has given him the best of starts, and he just needs to carry it forward. But this looks really difficult. But again, a calming save. Van der Sar for the rescue makes it possible. And now, I think Lokman just needs to calm down on his nerves, because we are seeing Shagni constantly applying that pressure. The moment he receives it, just running for the ball, trying to steal it away. And Lokmanu always alert, always on his toes. And good pass from Ronaldo. And now this is a good one. A lob through pass with Ronaldinho from that left wing, looking for opportunities, for avenues. Pull it towards Bellingham with Jarzinho, a little bit of a step over, tried to go for the shot. Wasn't really green timed, wasn't in the best of angles, but yeah, cookie points for at least trying. Yes. एंड ये ट्राई करते रहना होगा, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे तो प्रेशर इधर बनेगा सागनिक के ऊपर, एंड सागनिक को अगर आप प्रेशर पे रख सकते हो, क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ जा सकते हैं ये मैच, तो सागनिक भी इधर प्रेशर में होंगे ऑब्वियसली। ओह माय गॉड, व्हाट वाज दैट? एंड सागनिक बात कर ही रहे थे कि प्रेशर में आएंगे, एंड उसी जगह पे वो वंडर्स करके दिखाए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाए एक प्लेयर का, जिधर आपके पास ऑब्वियसली ड्रिबलिंग पावर मिलता है, सो व्हाई नॉट यूज दैट? हिल टू हिल करके फिनिश किए राइट कॉर्नर पे, एंड वैन डे सार जस्ट देखते रह गए। 1-0 बेंगलुरु एफसी एक बार फिर से लीड ले चुके हैं। केरला ब्लास्टर एफसी, उनके लिए कहानी सेम तरीके से चलता हुआ। Again, that little I liked how Mbappe just beat the man marking out there, right? Virgil van Dijk had no idea of what was going to happen. Again, an open chance on goal, and mind you, Shagnik is not one of those players who would miss from a spot like that. And just as we hit that 30 minutes marker, Kerala Blasters FC again on the back foot, looking maybe for a driven through, as Ronaldinho had already broken in for the run. But Lokmanu had other plans in mind. And these are few things that need to be talked about, of how constantly, opponents have been exploiting those little crevices and have been scoring balls. Again, a loose giveaway. I mean, defender could call an unlucky situation, went in for the tackle, had his legs on the ball, but slipped. And this time, a little nervy, but gets the job done. But on the attack, does not have enough men. This time will switch the play from that left side with Capdevia. Wanted to go in, but Capdevia is one of the more balanced left backs, does not have that blistering pace, something that Alphonso Davies or Theo Hernandez offer or put on the table. But still, in terms of the other attributes, Capdevia kind of completes himself over there, and sort of has been a go-to left back choice for a lot of these players. Now the short corner taken into a cross where Rudelit and his mammoth of a figure are enough to keep this attack at bay. जी हाँ, एंड देखिए जिस तरीके से फिलहाल के लिए गेम चल रहा है, इट्स टू टफ। बॉल लोकोमेनो की वो इधर से कम बैक करें, एंड अभी तक लोकोमेनो के जो 2 मैचेस हुए हैं, वो दोनों के दोनों मैचेस में वो एक से ज़्यादा गोल्स किए नहीं है। तो या शागनिक अगर एक और गोल कर देते तो मे बी इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स अगर हम लोग बात करें तो एक सेफर साइड पे जा सकते हैं, बट दोनों ही मैच में उन्होंने एक एक करके गोल जरूर किया है, सो ये भी देखना होगा। सो एक गोल के साथ अगर शागनिक का बैठे एंड वो अगर सेकंड गोल नहीं कर पाए तो इक्वलाइजर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। लेट्स सी क्या होता है। हकीमी एज ऑफ नाउ प्लेयर लॉक इन किया जरूर गया था, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिला, और बॉल खोने के बावजूद फिर से छीना गया है। फिर से विन करेंगे बॉल शागनिक। एफसी देखिए प्रॉपर टाइम ले रहे हैं, ठीक है, मतलब तुम आओ प्रेशर क्रिएट करो देन जाके बॉल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कुछ इस तरीके का स्ट्रैटेजी। बट बीचों बीच से बॉल निकलता हुआ, ये गोल होना ही चाहिए। होगा, नो वे, लकी
No, I don't know. I don't think I'd call that unlucky because come on, TT. This was a golden opportunity for Lokmanu. All he had to do was green time. He had 146 other options and he failed. I mean, there were in those 1v1 situations, either you charge in, then chip shot, or ball roll and take a shot. He went directly. And had he all he had to do was just green time that shot, and it would have been a goal. And I do not know if he's gonna get chances like that. And Bengaluru FC, look at that possession number, 63 to 37, clearly shows that Bengaluru FC has been the more dominating team. But in terms of shots taken, Kerala Blasters have got a little bit of an edge, but does not matter if you don't convert it into a goal, because Shagnik, he's been clinical with his strikes. And now with the advent of the second half, I mean, no, Lokmanu, he cannot afford to give away the ball like this. It's going to be hurting him right now on how he could just miss that chance over there. Yeah, and ball lose होता हुआ by the way इधर पास दिया गया था, but Mbappe उधर कंट्रोल नहीं गया, but लेफ्ट हैंड साइड से रोनाल्डिनियो, बॉल मौजूद उनके पास एंड ये ऑफसाइड नहीं है, एक पास एंड ये फिनिश हो सकता है। ये बाकी प्लेयर्स नहीं आए थे, बट रोडुली देखिए प्रेशर तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन बिल्ड होके क्या ये फिनिश हो पाएगा वो देखना जरूरी। बेलिंगम अभी भी मौका वैसे बना नहीं है, देखिए कोशिश रोनाल्डिनियो टू रोनाल्डो एंड एक गोल्डन चांस नहीं कर पाए कन्वर्ट। Again, we could see him handling another chance which could have been capitalized, but we know in those end moments it gets very, very dicey there. You kind of go with a set mentality and you try to take shots. I mean, okay, brownie points for trying there, and we know like if you have Mbappe, you can score a goal at least from ranges over there, even a little further down. It's not an issue, but this time went in for that outside footer with R9 and the defender, in fact, being there and just going out for a goal kick. And at this point, Lokmanu constantly making those chances, and he's been successful on those driven through passes, those lob through passes. Those runs have been spectacular from his side. A beautiful heel to heel. Ronaldo with that step over, tried to go for a shot, but this time Lucio is there for the rescue. आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये चांस शायद कन्वर्जन के खत्म होगा। यस यस यस, इट इज द टाइम जिधर केरला ब्लास्टर एफसी कम बैक करेंगे एंड लोकेमेनु फाइनली डेडलॉक तोड़ते हुए। एंड देखिए पिछली बार जो वो शॉट था एम्बापे सामने आ गया, उसके पहले वो बाहर पे लग गया। सो बहुत सारा कुछ सिचुएशंस झेलने के बाद फाइनली लोकेमेनु उनका पहला गोल होता हुआ। तो अभी भी वो स्टैट मेंटेन रहेगा कि हर मैच में लोकेमेनु कम से कम एक गोल तो वो किए हैं। सो इस मैच में भी किया गया है, बट उन्होंने कंसीड एक से बहुत ज्यादा किया है। सो वो इस मैच पे एटलीस्ट नहीं करना है और उनको पिछले मैचेस से बेहतर परफॉर्म करना है, एक और गोल स्कोर करना है अगर जीतना है इस पूरे ऑल ओवर मैचअप को, एंड इसके साथ अपना पहला 3 पॉइंट लेना है। तो अगर वो फर्स्ट 3 पॉइंट्स इधर से लेके जाते हैं तो वो बहुत सारे टीम से ऊपर जाने वाले हैं डायरेक्टली एक जंप के साथ। तो करना होगा, करके दिखाना होगा। अभी भी 30 मिनट बाकी, बट ऑन द अदर हैंड शाग्निक वो भी यही सोच रहे होंगे कि एक गोल एंड शायद हम लोग टॉप ऑफ द टेबल जा सकते हैं। It's turning out to be a nail biter, because at this point, Lokmanu, he's made it equalized, but Shagnik, he cannot just move like this the way he is doing that. Bengaluru FC fans would be hoping they get to see a winner out of him soon, but Lokmanu has been exploiting this driven through passes a lot, and he's been creating so many chances with Ronaldinho, with Mbappe, and that has been his go-to success area. So he's got to, I think he's got to get his, Shagnik has to get his fullbacks, alert, always on their toes. Look out for those breakthrough runs and try and stop it. But like you said, TT, I completely agree with you. We have seen Lokmanu be in this situation
a multiple number of times. At least the 2 times he's played his individual matches. But we have also seen in the second half he tends to concede those goals, and suddenly it becomes 2 to 3 to 4. We've even seen numbers go up like that. And now I think Lokman has had a really good start into the second half. A little bit of step over, wanted to pass towards R9, but paused. A player lock in, going in for Mbappe, will go for the run. I think he might just catch up with. Yes, there you go. I mean, saving the day. And this is where I mean, had that been my defender, he would have been beaten. But when you have such good cards, I mean, the best cards in the game, you tend to have those longer legs and those strides are even quicker, so tend to catch up on those runs. But now Kerala Blasters FC tried to go in, but a good, well-timed tackle, stealing the possession away. Yeah, but इधर अर्लिंग हलैंड राइट साइड से पहले ओके सो फाइनली एक और मौका बनता हुआ बट उसी टाइम पे लूशियो लाजवाब इंटरसेप्शन बट ये भी एक गोल्डन मौका था बाय द वे रोनाल्डो के पास कि वो इधर एम्बापे के लिए बॉल थ्रू निकाले लेकिन थोड़ा सा पीछे लेके आने की कोशिश था देखिए इस बार मौका बट वैन डर सार सेव गोल हो सकता था लेकिन लोकेमेनु उनको अभी समझना होगा कि अभी उनको क्लिनिकल रहना है उनको अभी गलत पासेस तो करने की नहीं है एंड स्पेशली और भी ज्यादा विजनरी पासेस निकालना होगा उनको थ्रूज निकालने होंगे अगर उनको इधर से स्कोर करना है तो आखिरी 10 मिनट जो भी गोल स्कोर करेंगे आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक डिसाइडर होने वाला है वो एक विनर होने वाला है रोनाल्डो टू थियो हर्नांडेज क्रॉस आता हुआ बट बीच में लूशियो उनका जो है उनका क्या ही कहना लाजवाब डिफेंडर वो ऐसे बॉल allow nahi karte usually. Yeah, and this could have been devastating, and this is good. But you know, I really want some innovative plays from Lokman yet again. He's been exploiting those wings, and Shagnik understands the situation. Oh, again, a good attempt on giving a through pass, but it not go through. And now Shagnik again trying to retain some possession on the ball, but a lot of loose balls being played out here. With Pele has to break through the left back, but no. At least Lokman knows he's got at max, you know, 2 more attacks remaining, or could be the final attack of the game. With the way he's proceeding, wants to keep it slow. At least does not want to concede a goal at this point because that would be heart-wrenching for Kerala Blasters FC. And Shagnik just wanting to retain some possession with Pele. Went in, but Theo Hernandez present. And now the onus has shifted. And this is where Shagnik gets his final attempt at maybe trying to score a goal. What a match! Oh भाई साहब क्या शानदार ये गेम चल रहा है लास्ट मोमेंट लास्ट चांस शागनिक क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे अभी भी बॉल कंट्रोल देखिए एक बार क्या बेहतरीन तरीके से हकीमी बॉल छीनते हुए फाइनली मैच इधर एंड हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट मिलेगा केरल ब्लास्टर एफसी को बट व्हाट अ मैच इट वाज ओ माय गॉड लाइक सच में पैसा वसूल मैच अगर बोला जाए तो इस पूरे ऑल ओवर टूर्नामेंट के अंदर इसको कह सकते हैं एक पैसा वसूल मैच लोकेमेनु जिस तरीके से बैक टू बैक कोशिश कर रहे थे ओह मजा आ गया सच में एक वर्ड पे अगर खत्म करना है इस पूरे गेम को तो हम कह सकते हैं मजा आ गया 2 वर्ड हो गए 3 ओके 2 हो गए जो भी है बट मजा आ गया जी हाँ मजा आ गया स्वाद आ गया जैसे भी कहे दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल गेम बट for Kerala Blasters FC, I don't know if they're going to be the happiest right now. I mean, they still managed to end up such a difficult tie with a draw. At least have shared points along with Bengaluru FC, where Bengaluru FC were looking to whiz past with those 3-pointers. Shubham off to such a beautiful start, won the game against CJ, and then Bengaluru FC come right back in. Shagnik and Lokmanu. This was a very evenly contested matchup, and eventually ended up with a tie. So finally, Kerala Blasters FC open up their account. Bengaluru FC will not be pleased with this scoreline because ideally they would have expected to go on to win this one and share points with FC Goa at the top of the table. So I mean, kind of a matchup where every fan of either of these clubs or maybe of a different club was enjoying themselves, had their heart out of their mouth moments,
And there were situations where we thought, yeah, this might go in, this might happen, but eventually did not go through. But let's take a look at who might the MVP be. And well, no doubt over there has to be Shubham Tam Tam, because what he did against CJ was nothing short of just phenomenal. What a win for this lad, and it's gonna boost his morale completely. And another interesting fact is that Shubham has been winning his individual games, has been drawing, hasn't been on the losing side, but it's their co-op that needs to be massively worked upon, because that is where we have seen them kind of struggle a little bit. This player had one of the longest undefeated runs in the eISL season 1. This time also he's going undefeated. The first game had been a draw. This next 2 games he has managed to win his individual battles, but the co-op is where Kerala Blasters FC have been struggling, and Lokmanu still fighting against his demons, still looking for that W. या एंड ओवरऑल अभी तक जिस तरीके से गया आज का पूरा दिन, मजा आ गया। ये वर्ड्स है, ये हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये आखिरी मैच मुझे तो लगता है कि लाइक या शुरुआत हुआ था आज के दिन का, जिधर हम लोगों को एटीके मोहन बगान डाउन होते हुए दिखे एंड बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया। एंड उसके बाद ईस्ट बंगाल के भी सेम हशर हुआ, जिधर हम लोगों को अपोजिट साइड से हैदराबाद की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस आते हुए देखने के लिए मिला। एंड उसके बाद हम लोगों को चाहिए था कि एक ऐसा परफॉर्मेंस आए जिधर दोनों तरफ से एकदम फुल ऑन अटैक हम लोगों को देखने के लिए मिले, या फिर दोनों ही तरफ से एक ऐसा कोशिश हो कि नहीं आज तो जीत के ही जाएंगे। तो वो एक गेम मिसिंग था जो कि ये आखिरी गेम पे आके पूरा कर दिया। सो हम लोग कह सकते हैं कि यस, आज का दिन कंप्लीट हो चुका है। Yes, I mean, for everybody who was rooting for Kerala Blasters FC, this did go down the wire. I mean, Shubham, it must be hurting at this point, despite getting that win, just had to share a point, and they learned. I think they're learners right now. They'll have to quickly adapt and adjust. Kerala Blasters FC have played 3 of their games, and of the 3 have just managed to secure 1 point, where Bengaluru FC have secured 1 more. It's going to be interesting to see where they stand in the leaderboard. Let's take a quick look at the leaderboard and see after FC Goa who are the clubs present. And Mumbai City FC, now they're on top, and of course, courtesy to that 1 extra game played, they haven't lost a game, so that 1 draw comes in. So when FC Goa, we see them in action, they have the chance to reclaim their top spot. At the 3rd spot, we do have Hyderabad FC, 1 win and a draw. But there you can see Kerala Blasters FC, after 2 losses, that 1 draw giving them that 1 extra point, where Odisha FC are yet to play their second game, where they would also want to collect a few more points. या ओवरऑल लीडर बोर्ड की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे टीम्स हैं जो कि 3 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे अभी के लिए केरला ब्लास्टर एफसी एंड ईस्ट बंगाल एफसी रहने वाले हैं, क्योंकि 3 मैच मिला के सिर्फ 1 ही पॉइंट मिला है। बट आई थिंक जो शुरुआत था ईस्ट बंगाल एफसी के लिए वो ड्रॉ के साथ हुआ था, एंड उसके बाद बैक टू बैक तो हार हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड केरला ब्लास्टर एफसी शुरुआत जो हार के साथ हुआ था, उस जगह से मुझे लग रहा है कि उनका इंप्रूवमेंट डे बाय डे हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि फर्स्ट मैच हम लोगों को काइंड ऑफ एक तरफा हार देखने के लिए मिला था। सेकंड मैच शुभम जीते, थर्ड मैच आज के दिन पे शुभम एक जीते, फिर एक हारे कोऑप पे, एंड उसके बाद थर्ड पे लोकमेनु ड्रॉ किए। सो आई थिंक एक इंप्रूवमेंट हम लोग को केरला ब्लास्टर की तरफ से देखना चालू हो चुका है। Yeah, of course. I mean, this was an eye-opener for all the clubs that no club is invincible. Anyone can be beaten. You can take a draw, but it all comes down to the mentality of the players, and it's a learning lesson for just not these 4, but for the others who are also watching this game, that this is going to take an interesting turn of events. Still in those early phases of eISL Season 2, but how exciting have these games been going. But folks, this is all we have for today, because the action is also going to resume tomorrow right from 7 p.m. So you guys don't forget to tune in. Till then, good night and have sweet dreams.